Our topic for today is taxes. Taxes are charges upon an individual or property. Taxes are the charges on an individual or property to meet government expenses. To meet government expenses. To provide government, why does the government collect these taxes from us? To provide various services. To provide various services like transport, comma, defense, electricity and water. डिफेंस मतलब देश की सुरक्षा भी तो गवर्नमेंट का ही काम है. डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड वाटर. द लिस्ट डज नॉट एंड. बहुत सारी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस टू प्रोवाइड ऑल दीज सर्विसेज to public. Is it clear? So this is the first thing about taxes, which we already know why government collect taxes from us and why we pay taxes to the government. Now, what is VAT? VAT is the tax we pay to the government. That is equal to value added tax. What is VAT? VAT is value added tax. Second thing we must know to do the questions is sales tax or VAT is always calculated on cost price. Sales tax or VAT is always calculated on cost price of the good. मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पे हम सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और सेल्स टैक्स और वैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी ऑफ द गुड. अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा गुड? व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड? Actual cost, what we pay to the actual cost price is equal to cost price plus tax. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होता है गुड का? हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस द टैक्स वी पे. प्लस द टैक्स वी पे. हर गुड पर हम टैक्स पे करते हैं. सम गुड्स इट इज रिटर्न दैट, जैसे टी शर्ट, इट इज रिटर्न included
इंक्लूडिंग MRP है, वो गिवन है ₹500 and it is given that including tax. So you don't have to pay tax after that क्योंकि 500 is including tax. तो आपको इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना है टी शर्ट पे. The actual CP of the t-shirt is ₹500. It includes tax. Cost price plus tax is equal to ₹500. I hope you have noted it down so that we can start with the questions related to tax. Question 1 related to tax is, question 1 says, a stationary item is listed, मतलब list price और MRP listed at rupees 195. A sales tax of 2% is added. A sales tax of 2% is added. What is the cost of the item to the customer? Customer क्या पे करेगा उसके लिए? What is the cost of the item to the customer? What is the cost of the item to the customer? कस्टमर को वो कितने रुपीस की पड़ेगी अगर वो उस आइटम को खरीदता है? सो कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, you can also write LP, that is list price of item, is equal to ₹195. टैक्स क्या है? 2% of the list price या cost price. 2% of 195 is the tax. 2 by 100 into 195, that is equal to 2 into 1.95, that is equal to 3.90 rupees. So, what is the cost of the item to the customer? Cost of the item, इसमें देखिए अब आप 195 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो यही हमने किया है यहाँ पे. और 1.95 into 2 is 3.90. Cost of the item to the customer is equal to ₹195 plus tax, that is ₹3.90, that is equal to ₹198.90. 198.90 is the cost of the item to the customer. I hope you are clear with the question. List price given है, tax given है, tax given है 2%.
of the list price, so 2% of 195, that is equal to rupees 3.90. और कितना कॉस्ट कस्टमर को पे करना होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स. द कस्टमर हैज टू पे कॉस्ट प्राइस प्लस द टैक्स. Question 2 says, the following items are purchased from the hardware store. The following items are purchased from a hardware store, that is saw worth rupees 495, hammer rupees 240, letterbox rupees 200. So what is the total bill after tax of 7%? What will be the total bill after tax of 7%? मतलब टोटल बिल इसका क्या होगा आफ्टर वी पेड द टैक्स. पहले तो टोटल बिल कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल बिल आप देख सकते हैं, टोटल बिल रुपीज 495 प्लस रुपीज 240 प्लस रुपीज 200, इन सबको ऐड कर देंगे. दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5, एंड में 5 आ गया. 9 प्लस 4 13, 1 3 13, और 4 4 9 935 रुपीज. 935 rupees. 935 rupees is the total bill. So tax is equal to 7% of 935, that is equal to 7% means 7 upon 100 into 935. ये 5 से दोनों कट जाएंगे. We will get here 1, 4 carry over 43, 8 times, 3 carry over 7. And what about this 20? We can multiply this 187 into 7. We get the tax equal to rupees 65.45. 187 into 7 is equal to 1309 divide by 20. 65.45. And what is the amount we have to pay, या bill, total bill क्या होगा? Total bill will be equal to rupees 935 plus the tax, that is rupees 65.45, that is rupees 1000.45. That is your total bill. Rupees 1000.45 is the total bill after he has to pay a tax of rupees
65.45. I hope you have understood this question. आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है प्लस उस पर बिल पे 7% एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं टैक्स के, तो वो आप निकालेंगे, वो आपको कितने देने हैं, दैट इज इक्वल टू 65.45, और उसको इंक्लूड करके टोटल बिल विल बी इक्वल टू ₹1000.45. I hope you are clear with this question. Can we start with the next question? Okay. Question 3 says a table is sold a table is sold at rupees 4815, including 7% VAT. मतलब ये एक तरह से कस्टमर को इतना पे करना पड़ा और इसमें इंक्लूडेड है 7% VAT. What is the cost of the table before VAT is added? What is the cost of the table before VAT is added? मतलब कॉस्ट ऑफ द टेबल वैट ऐड करने से पहले क्या थी? आंसर, लेट कॉस्ट ऑफ द टेबल बिफोर वैट इज इक्वल टू ₹X. कॉस्ट ऑफ द टेबल, जो चीज निकालनी है उसने उसे हमने x ले लिया. कॉस्ट ऑफ द टेबल बिफोर वैट इज एडेड इज ₹X. अगर कॉस्ट ऑफ द टेबल x है तो x में वैट कितना ऐड होगा? व्हाट इज वैट है? वैट इज इक्वल टू 7% ऑफ x. 7% हमें देना है उसे ऑन x, राइट. और अगर आप x प्लस 7% ऑफ x करेंगे तो यू विल गेट 4815 जो हमने पे किया. तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट आफ्टर टैक्स इज 481315 विच इज गिवन टू अस. ये देखिए, इसको 100x/100 कर सकते हैं, प्लस 7/100x इज इक्वल टू 4815. So how you will solve this? Hundred x plus 7x is equal to 107x divided by 100 into 4815. So x is equal to 4815 into 100 divided by 107. अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे. 4815 divide by 107. 4 times is equal to 428. ये माइनस करेंगे, व्हाट यू विल गेट? 3. यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 7, 5, 5, 535. ये 5 टाइम्स जाएगा. 535 सब्ट्रैक्ट करेंगे
you will get 45 into 100. So your answer is rupees 4500. Cost before tax is rupees 4500. That is the last question for today.